Welcome to the word of Radio Spark, the voice of Jaipuria. ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ भगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूप गुणविभवैश्वर्यशीलादिनवधिकातिशय असङ्ख्येयकल्याणगुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निर्वद्यां देवदेवदिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् असरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये. Hello everyone. Today we have with us Sri Karan Ramanuja Das, the guide, mentor and spiritual guru to people with him and around him. We got introduced to him when he came to our virtual yoga session as a guest. He belongs to Kanpur but has now taken to spiritual leadership, and his journey of life is extremely interesting. For me, the most interesting part about him, he is very young. He is just 24 years old and has a lot to share with us. May I put forth a question to you? Yeah, sure. You deviating from the normal life that students lead and further pursue in their life, you have taken to something very, very different, very, very enriching, and of course you are enriching the life of so many people. Tell us a little about how you stepped into this life and how this has become a motivation to many. Yeah, sure. Actually, one thing I would like to say, that the purpose of human form of life is not just to live for ourselves, but is to think of something beyond also. And from my very childhood, I was somehow a person who used to think a lot, who used to introspect a lot. I was little introvert kind of person. And from there, I used to view life. I used to see people. I used to observe them. I like to share a small incident from my childhood. There was a lady who used to work in our home. She used to cook. She was an old lady and had 2 sons. Somehow, at one point of time, she had to go for some leave, and there, through the train, she fell down and she got a fracture in her leg. Now, both of her sons did not take care of her well. They just left her nearby a temple where I stay. Once in my childhood, when I saw this condition, I felt very bad. And then I got this thought that somehow or the other I should serve her. And I used to daily go, give her some prasad, give him some kind of food I used to give, and try to serve at my small age, whatever level it was possible. I used to do that. And after 2-3 days probably, she left her body. And that time I felt very sad. I felt that somehow or the other, there are so many people who are suffering. They need some kind of ray of light. They need some kind of assistance. And believe me, it is not just help at a physical level. It is a help at a mental level, at an emotional level, and finally at a spiritual level. So therefore, I thought that I should do something, and I told my mother that I will one day create a kind of orphanage, or I'll create some kind of facility by which all these people can be served.
And then this thought process started, and I began my journey searching for many things, because one thing I understood, that life in it is not complete, and definitely there is some other higher purpose to life also. Then in my class 10th, I just heard that Bhagavad Gita has answer to all the questions. Such an eye-opening journey, and it is very close to our heart. So how do you wish to share your knowledge with the youth of the day? Yeah, definitely. The youth can bring the real transformation. Only thing, we need to give a proper direction to them. We need to give a proper guidance, and once that energy is guided and channelized into a proper way, it can bring a tremendous transformation. Now it is a world of iPhone, iPad. Everything is related to I. So when we are living in this world of I, that I want things for myself, for my benefit, then we cannot focus on we. So the entire concept of today's youth should be turned from I to we. Being an educationist, I can very well connect to each of the words that you have said just now. And I wish the youth of today, they hear you, they understand you. You are yourself, again, I'm reiterating, such a young person. Probably they can connect to your words better. Taking from the insight that you shared just now, I would like to ask you that today's world is very competitive, very complex, and everyone is running a rat race, and crab syndrome, trying to pull down the other. All these are complex, not happy things to happen. But happiness is what we want. Yes. Right? Can you help not only the youth, but the people all around to understand and appreciate and work towards happiness? Yeah. So definitely we can understand that the world which is going today, everyone is in a rat race, and everyone is somehow or the other कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दुख तो है ही. क्योंकि एक्चुअली अगर हम गीता का पाठ पढ़ें तो उसमें देखते हैं भगवान खुद ही कहते हैं ये संसार क्या है, दुःखालयम अशाश्वतम. तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं टेम्पररी हैं, परमानेंट रहने वाली नहीं हैं, कभी ना कभी तो नष्ट होंगी ही. तो दुख तो आना ही है, ये बिल्कुल सत्य है. तो हम इसको स्वीकार कैसे करें? सबसे पहली बात यह है एक्सेप्टेंस, कि जो भी चीज़ हमारे जीवन में हो रही है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं इसके आगे कुछ ना कुछ बेटर है, कहीं ना कहीं इसके आगे कुछ बेहतर है जो मेरे सामने छुपा हुआ है. अगर हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं है, हमारे अंदर वो एंथुजियाज्म नहीं है, तो हमें उनके बीच में जाके बैठना चाहिए जिनके पास वो हो. तो ऐसे व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे. कहीं ना कहीं कोई, चलिए वो आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक एनकरेजिंग बात तो करेगा. तो आप जब भी डिप्रेस हैं, जब भी परेशान हैं, तुरंत अपनी सीट से उठिए. दैट मोमेंट ओनली वी शुड गेट अप एंड वी शुड गो टू दैट एसोसिएशन, क्योंकि संग से ही रंग आता है. यानी जिस तरह का आप संग करेंगे उसी तरह का आपको रंग मिलेगा. द बेस्ट सॉल्यूशन, द की टू हैप्पीनेस विच आई टेल इज एसोसिएशन. मेक योर एसोसिएशन पॉजिटिव, be with positive people, and that will gradually transform your life and bring that happiness to you. Such a wonderful and inspiring answer you have given, and it is very relevant with today's timing. So Swamiji, as we know that you are from a totally scientific background, and how did you develop your interest in this ancient practice, and do you think it is relevant to today's scenario? Yeah, actually one thing I'll say, that we can't differentiate science and spirituality, because spirituality in itself is a science. I personally call it as a spiritual science. Only thing, the current science may deal with some gross things, it may deal with some machinery, it may deal with some physical gross objects, but spiritual science deals with a more subtle thing. So therefore, I don't distinguish it. And there are so many pramanas, there are so many proofs in the Shastras which tell that how our rishis, our sages knew about various things. There are so many facts
about the universe, the distance between sun and the earth. And if you read Srimad Bhagavatam, then there Kapil Muni describes about the stages of the growth of the embryo in the womb. Now, can you imagine there was any X-ray at that time, or there was any kind of such technology at that time? But still, it is described there, and nowadays people are finding it to be correct. And now there was a scientist, Indian scientist, Mr. Bose, I think so, probably in 1927 or something around. He found that plants have life. Before that, science used to believe plants don't have life. So science keeps changing every time. But our scriptures have been telling this since ages long that plants have life. दो प्रकार की चीज़ें हैं, चर और अचर. तो जो अचर हैं, जो नहीं चल सकते, वो यानी पेड़ पौधे आते हैं उसमें. तो both categories are there. So therefore, science may tell something of the gross world, but our sages, our rishis and munis have seen those things through a inner vision, through a आंतरिक दृष्टि से उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा है और उसको जाना है. तो मैं इसे अलग नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस साइंस और आध्यात्मिक साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान को मैं एक ही मानूंगा. बस ये मानूंगा कि उनका स्तर अलग अलग जगह पर है, एक भौतिक चीज़ों पर है और एक आंतरिक चीज़ों पर है. बहुत ही सुंदर जवाब इस बात का, और हम सब अपने आप को इससे रिलेट कर सकते हैं. सो विल यू शेयर योर व्यूज अबाउट एम्पैथी? Yeah. See, empathy basically means, what I feel is to put yourself into the shoes of others and to understand their pain. Correct. जब हम उनके दुख को, उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे, तभी हम उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे. आज के समय में, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का सेंटर आय हो गया है, मेरी ओर हो गया है. तो जब हम लोग उसी स्थिति पे नहीं है, जब वी आर फोकसिंग ऑन आवर सेल्स, तो हम दुनिया के बारे में कैसे सोचेंगे. हमारा जो कल्चर है वो वसुधैव कुटुंबकम का है. हम पूरी धरती को ही अपना परिवार मानते हैं. हम ये नहीं कहते. देखिए आजकल क्या हो गया है कि अगर मान लीजिए पहले के टाइम में जब ट्रेन में भी जाते थे, तो ट्रेन में जो आसपास हमारे होते थे उनसे भी हमारा रिलेशनशिप बन जाता था, उनसे भी खाना पीना सब एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता था. इतना एक मित्रता होती थी, इतना एक प्रेम का माहौल होता था. तो हम लोग एक दूसरे का कष्ट तब समझ पाते थे जब हम उन्हें अपना समझते थे. अभी हमने क्या कर दिया, अपने आप को लिमिट कर दिया है. एक बहुत सुंदर इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा. एक स्वामी जी थे, उनसे मैंने सुना ये, और वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति आए उनके पास और उनसे बोले कि मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है. नाउ ही वॉज शॉक्ड बिकॉज ही इज़ अ सन्यासी. तो वो बोले कि भाई पर्सनली क्या बात करनी है, आप सबके सामने करिए, कोई दिक्कत नहीं है. बोले नहीं, बहुत ज़रूरी है, मुझे प्राइवेट पर्सनली ही बात करनी है. तो बोले चलिए ठीक है. तो ही वेंट विद हिम और उन्होंने बोला कि देखिए, हमने अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन अभी वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. हमने अपना सारा जीवन दिया उनको, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. उन्होंने बोला कि आपने अपने बच्चों के लिए जीवन दिया और किसी के बारे में सोचा नहीं, तो अब वो भी वही आगे कर रहे हैं. क्योंकि आपने केंद्र क्या रखा. देखिए, जनस्य मोहम यमहम ममेति, यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारे शरीर से संबंधित हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन से संबंधित हैं, जो मेरी संतान है, जो मेरे पिता हैं, जो मेरे पुत्र हैं, जो मेरे शरीर से संबंधित हैं, मैं उनको ही अपना मानता हूँ. और जब मैं उनको ही अपना मानूंगा तो मैंने क्या कर लिया, एक लिमिटेड दायरा बना लिया. तो कभी उस तरह का विचार नहीं आया कि हमें समाज के लिए जीना है, हमें दूसरे को कष्ट को समझना है. तो जब हमने वो सिखाया ही नहीं, जो पेरेंट्स हैं जब वो ये सिखाएंगे कि भाई केवल यही फैमिली नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही तुम्हारा परिवार है, जो भी कष्ट में है उसकी सहायता करो,
तो वहाँ से एम्पैथी का पर्पस सार्थक होगा। क्योंकि हम अभी आय के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब संसार के बारे में सोचना चालू कर देंगे, उसमें हमारे पेरेंट्स भी आ जाएंगे, उसमें हमारे भाई बहन भी आ जाएंगे, सब लोग उसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। तो उनके लिए कुछ अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक प्रकार से आप सभी का उद्धार कर देंगे, आप सभी के बारे में सोच लेंगे। एंड दैट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ एम्पैथी, कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें, और वो तभी हो पाएगा जब हम इस आय से बाहर निकलेंगे। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा। हम जारी करना रखना चाहते हैं। लगता है कि समय न देखा जाए, उधर से कोई हमें ये इशारा न करे कि हमने बहुत देर तक बात कर ली है, पर कहीं ना कहीं जाके एक विराम देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे जो लोग इस रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि हम इसके लास्ट फेज पे पहुंच गए हैं। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग विद अस, and it has been an enriching session. Further, when it is shared with the others, I'm very sure everyone will feel enriched by listening to your words and your advices. Thank you so much for inviting me for this session and to share this divine knowledge, because I feel that the greatest service which can be done is to preach this knowledge and to bring a real transformation in this world. So thank you very much. Jai Shri Narayana. जय श्री